Hi everyone, so in this video I'm going to discuss some other sections. I'm Roshni Choudhary. I secured AIR 26 in 2023 EPFO examination that was conducted by UPSC. तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग पेपर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर ऑन द फाइनल डे. ठीक है, so first of all, I have uploaded a very long series and it took a lot of efforts honestly just to forget everything that I know and then to attempt the paper. So I did that entire exercise to make you understand कि 2 घंटे में जब आप पेपर देते हैं, फर्स्ट थिंग वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, स्टिल यू विल डू देम रॉन्ग. दिस हैपन्स विद एवरीवन एंड यू आर नॉट एन एक्सेप्शन. फिर घर पे आके हम ये सोचते हैं अरे यार काश ये क्वेश्चन सही हो जाता. वो नहीं होना था क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम है और वहाँ पे जितना भी आप कर रहे हैं उसमें से एक सम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आपके गलत होंगे ही. ओके, सो टेक दैट मार्जिन. दैट इज़ वन पॉइंट दैट आई रियली वांट टू हाईलाइट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉक टेस्ट एनालिसिस जो मैंने 2017 का पूरा पेपर डिस्कस किया है आपके साथ में. उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए. सो आई अपलोडेड द रियल टाइम 2 hour लॉन्ग वॉइसलेस जस्ट सॉल्विंग ऑफ द पेपर. ओके, आई डिड नॉट से एनीथिंग. उन 2 घंटे में मैंने बस अपने मन से उसको सॉल्व किया. फिर मैंने एनालाइज किया कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड एवरी क्वेश्चन बाय डिस्कसिंग कि मैंने क्या सोच के ये मार्क किया. और ऐसा आपके साथ भी एग्ज़ाम में होगा, कई लोगों के साथ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ होगा जिसमें आप रिलेट कर पाएंगे बहुत आराम से. ओके, सो इन दोज 2 hours वन थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज़ कि हर एक क्वेश्चन पे मैं कितना टाइम दे रही हूँ, कौन सा सेक्शन है जिसको मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, कौन से सेक्शन को मैं कम टाइम दे रही हूँ. ओके, देन मेरा फर्स्ट आइट्रेशन कितने टाइम में ख़त्म हो रहा है. अलॉन्ग विथ पुटिंग अ टिक आई ऑल्सो इंश्योर कि मैं अपना बबल शीट भी फिल कर रही हूँ साथ का साथ. सो आई डोंट कम बैक टू दोज क्वेश्चन जिसमें मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिया है. ओके, ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जब मैंने एनालाइज करा है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मे बी आई हैव नॉट डिस्कस्ड और आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ द राइट आंसर. I have discussed what is the right answer, but not like why it went wrong. For me, I discussed that because this is something which you really need to understand. जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो आपने क्या थॉट प्रोसेस के साथ में वहाँ पे अटेम्प्ट करा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. ओके, सो मेक श्योर कि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा डेवलप हो रहा है जहाँ आप एग्ज़ाम हॉल में पैनिक नहीं कर रहे हैं. ओके, इवन इफ़ योर क्वेश्चंस आर गोइंग रॉन्ग, इट्स ओके, डू नॉट पैनिक. You have a different you have you have plenty of time and you have plenty of opportunity to make yourself correct. अगर कुछ गलत हो गया तो हो गया. कई बार ऐसा तक होता है दैट यू आर मार्किंग थिंग इन योर पेपर करेक्ट, बट जब आप बबल शीट फिल कर रहे हैं तो आप गलत मार्क कर रहे हैं. दैट ऑल्सो हैपन्स. डू नॉट पैनिक, जस्ट डू नॉट पैनिक इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है, जो मॉक टेस्ट एनालिसिस है आपको टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए या नहीं. इफ़ यू आर डन विथ ऑल द यूपीएससी पेपर्स इंक्लूडिंग सीएससी, सीडीएस, एनडीए एक्सेट्रा, यू कैन गो अहेड विथ टेस्ट सीरीज़. बट अगर आपने इनको ढंग से नहीं करा है, प्लीज़ डू दिस फर्स्ट. आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट मोर. यू हैव टू कम्प्लीट एंड डू इट थरली. मतलब मुझे एक पेपर मॉक एनालाइज करने में एक दिन लगता ही है. देर इज़ नो वे आई वुड बी एबल टू डू एनीथिंग जल्दी. ओके, सो यू हैव टू टेक योर टाइम एंड यू हैव टू रिसर्च एवरी क्वेश्चन एंड यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ एवरी क्वेश्चन. ओके, दैट इज़ हाउ यू गो अबाउट सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग द पेपर. अगर आपने सीएससी के सारे क्वेश्चंस एनालाइज कर लिए हैं, अगर आपने यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम का सारा क्वेश्चन एनालाइज कर लिया है, then you can go ahead with test series. But otherwise do not take the risk of going with test series क्योंकि जो फाइनल पेपर होगा दैट विल बी मोर इन लाइन विथ यूपीएससी, नॉट विथ एनी टेस्ट सीरीज. ओके, सो मेक श्योर दैट you're giving preference to UPSC backed questions and UPSC backed टेस्ट जो भी आए हैं सीरीएस एनडीए वगैरह में. ओके, देन someone had mentioned that please do the detailed analysis of today's paper live. So the thing is that I started recording it beforehand itself. For next
time I'll try to do it live. Also उस time पे I did not have enough follower to go live with a lot of people, so that's why I did not want it to go live. But now I think I have enough subscribers. I might be eligible for that thing. तो इस बार I'll try exploring it out. I might have to research it as well, and I'll try to do detailed live analysis with the next thing whatever I do, if at all there is enough time and if it permits us to do that. I'll do that. Okay, so yeah, so test series कौन सी follow करनी है? So this is something which I'll leave up to you guys. There are a lot of there are a lot of different institutes that are there in the market which are providing the test series. जो भी आपको सही लगती है, you can go ahead with that. I personally have not used any test series, so that's why I'm not very sure. But अगर मुझे questions पता चलें या मुझसे कोई पूछे तो हो सकता है कि मैं उसको ये कह सकती हूँ कि हाँ दिस इज़ वेरी क्लोज टू एग्ज़ाम, गो अहेड विद इट. ठीक है, दिस आई कैन डू. ओके, बट अदरवाइज taking name of any one institute up front, I'm not very sure because I personally did not utilize anything of that sort. मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा PYQ के भरोसे छोड़ा हुआ था, and I was like PYQ करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे. So you can choose doing that. That's a very good approach. Okay. Real time solving हमने देख ली है. Okay, make sure that you are practicing enough to get an idea and get a hang of things. You have 120 questions and not 100 questions. यहाँ पे questions ज़्यादा हैं, तो please make sure कि आप थोड़ा सा extra मतलब vigilant है in completing your paper on time. You only have almost like 1 minute per question, और maths भी है तो maths में time लगता है, and please make sure that you are quick enough for other questions so that you can take time for maths. Okay. And one more very important thing with regards to this paper is that यहाँ पे बहुत ज़्यादा questions हैं जो one liner है. मतलब there's only question, one liner question, and then you have options. ये एक बहुत ही tougher pattern है. We all know that UPSC के comparison में this is a very tough pattern. तो make sure that you are used to doing such such questions with one single question and 4 options. Okay, this is tougher because either you know it or you don't know it. इसमें बहुत कम होता है अगर आप एलिमिनेट वगैरह कर सके based on the question itself. ठीक है, तो you have to have knowledge. Okay, so please make sure that you have prepared well enough for this pattern. Okay, and one more important thing is कि जो आपकी एनालिसिस आप कर रहे हैं उसकी जो भी आप नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप सारी चीज़ें लिख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट अगेन अगेन. ओके, अगर आपको नेक्स्ट टाइम लगता है कि इस फैक्ट पे और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, डू दैट एज वेल, बिकॉज द मोर यू एनालाइज, द मोर यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, द मोर you read with regards to the question, the better you are placed to actually get to what might be the correct answer in the final examination. अगर question आस पास आया, you will be in a much better position to answer that particular question. Okay, also practice every day अगर possible होता है आपके लिए तो, या फिर revise every day, whatever is possible for you. प्लीज़ डू दैट. अब थोड़ा सा और अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर यू कैन, एंड दैट्स वाई यू शुड प्लीज़ मेक श्योर दैट you are not lacking now. Okay, all the very best. I hope all of you get enough sleep meanwhile, and also keep drinking water. I'll make a video on taking care of your physical health as well, क्योंकि पेपर से पहले you need to have good physical health as well. बीमार नहीं होना है पेपर वाले दिन. You have to be in very high spirits to go and attempt the paper with full confidence. So make sure that you're practicing enough, you're revising enough. जो आपने अभी तक प्रैक्टिस करा है उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए. जो टेस्ट आप लगा चुके हैं उसके जो आपने शॉर्ट नोट्स लिए हैं उनको रिवाइज़ कीजिए. कीप ऑन रिवाइजिंग एवरी पेपर दैट यू हैव solved, and please make sure that you stick yourself with CSE. Okay, this is all about paper practicing. We have in detail discussed how to go about other things. If possible, I'll also make a video as to how to analyze mock, although
I have made a real-time video on that, but I'll just make a video telling you the overview of things. Okay. That's it for this video. If you have any other question with regards to this particular section, please keep asking in the comment section. I'll take up in the next video. Thank you very much. All the very best.